हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार असैसिन्स क्रीड वालहल्ला में। वालहल्ला तो यार हमारी पावर 25 है अभी। और सबसे पहले तो हम लोग रेवेंसट्रॉप के सब मिशन कंप्लीट करने वाले हैं जो स्टोरी मोड है। अभी अभी जस्ट आए हैं, इंग्लैंड में बसे हुए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो लेट्स गो। सीगर्ड को मिलना है। लेट्स स्पीक टू सीगर्ड। What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. A bed better than many I've slept in, and a good place to recover. सीगर्ड ने खुश होके मुझे ये सोने के लिए जगह दी है, तो ये जगह हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे A लेटेस्ट वगैरह letterbox आएंगे। for messages and requests. नाइस। Not much, but it is mine. और ये बहुत ही शानदार बेड, बहुत ही शानदार तकिया साथ में उसके। अब जाना कहाँ है, किससे बात करनी है? मीट सीगर्ड एट रोवंस टेबल। A moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. Why now? Doug, please. This must... What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. तो गाइस यार ये हमारे स्किल्स है और हम लोग मेली अटैक ज़्यादा करने वाले हैं, तो बियर ट्री जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे स्किल्स में। तो यार क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पावर्स, बहुत ज़रूरत लगने वाली है इसके आगे। तो यार लेवल 26, लेवल 27, पावर लेवल 27 हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप स्किल्स को इसको मतलब बोलते हैं ना, उसको क्या करना, रीसेट भी कर सकते हो। तो मतलब टेंशन ही नहीं कुछ। अगर गलती से आपको वो स्किल नहीं चाहिए, आपको ये स्किल चाहिए, तो आप इसको वापस मतलब कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं उसके बारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी एक्चुअली आपके गेम प्ले के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा गेम प्ले खेलना है। आप स्टेल्थ गेम प्ले करने वाले हो तो आप येलो
जो रेवन ट्री है, रेवन, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मेनली अटैक क्लोज कॉम्बैट करूँगा तो बियर वाला ट्री यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप लॉन्ग रेंज मतलब एरोज और बोस अगर गेम प्ले खेलने वाले हो, आपको अगर गेम प्ले सूट करता है, डिपेंड्स आप कैसा गेम प्ले हो आपके ऊपर है, तो तभी आप जो थर्ड ट्री है ब्लू कलर में, उसका नाम मैं भूल गया, मुझे नाम पता नहीं है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके स्किल रिस्पॉन्स आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए यार, किसको मिलना अभी? स्पीक टू रणवी, रणवी को मिलना है। रणवी, रणवी जी आ गए। You wanted to see me? As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. And what's more, our young friend Hytham has been conferring with contacts of his own in the cities. I added his information to the map if you would like to know what he has discovered. I should go. Word of our growing settlement has I want to see the Alliance map. Tell me about Grantebridgeshire. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. तो गाइस देखो, ये इंग्लैंड का पूरा मैप है, पूरा इंग्लैंड कंट्री का। तो हमें जाना है लेदरचेस्टर में। लेदरचेस्टर कहाँ पे है? तो यार लेदरचेस्टर का पावर लेवल है 20, तो अपना 27 का पावर है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, तो एकदम इजीली हम लोग कवर कर सकते हैं पूरा मैप लेदरचेस्टर का। तो उस इलाके में हमको सबसे पहले करना है सिगर्ड ट्रैवल नॉर्थ वेस्ट। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे जाना है। सिगर्ड के साथ जाना है, लेट्स गो। सिगर्ड के साथ ही जाते हैं, वो सूटेबल रहेगा बहुत। काम करते हैं, फास्ट ट्रैवल करते हैं, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता पकड़ेंगे गांव में, ठीक है। ओके चलो, यहाँ से थोड़ा करीब लग रहा है जहाँ पे हमें जाना है, तो फास्ट ट्रैवल करते हैं।
और अभी हम लोग आ गए फास्ट करके, तो चलो यार सीधा यहाँ से, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से सीधा हम लोग घोड़ा भगाएंगे। ओके तो लेट्स गो। और ओपन वर्ल्ड है तो कहाँ पे भी आप घूम सकते हो। तो भाई भेड़िए लोग ये बाजू उठो, पीछे पड़ेंगे ना तो मार देंगे मेरे को ऐसे ही। नज़ारा देख रहे हो गाइस, गेम के ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है। ओ भाई इन लोग आ रहे हैं, तो भागो भाई घोड़े, भागना भाई, भाग रहा क्यों नहीं घोड़े। तो यार कोई नहीं, हमने उनको डॉज कर दिया है। अब आ चुके हैं अपने मुकाम पर, जहाँ पे हमें मिलना है किसी से। रेप्टॉन नाम है इस जगह का, इस किले का। यहाँ पे Sigurd should be here with Arachnesons. ओके। ओ भाई, ओ माँ कसम, इसको तो 3rd डिग्री दे रहे भाई। मैं साले कितना 3rd डिग्री देगा उसको मुंबई पुलिस। Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor! If you keep that up, we'll stay in the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies! Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you a tour. Repton. Sigurd should be here with Arachnesons. What do you call this place? I call it the shithole. To the Mercians, it is Repton. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. Repton. Sigurd should be here with Arachnesons. Don't play me for a fool, Abba. I know Burgred. I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. This is one of them. My worries have vanished. Eivor, Wolf-Kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Shellwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes.
Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Ceolwulf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Ceolwulf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, removed. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia. And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Ceolwulf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this, for years to come. For all the wrong reasons, I fear. A lively town. Quite a lot to see here. तो गाइस यहाँ पे एक साजिश रची जा रही है। ये सब लोग हमारे अलायंसेस है। तो यहाँ पे जो किंग है पहले से उसको उतार कर उसको डीथ्रोन कर कर यहाँ पे जो अभी जो था किंग उसको सौंप देना है। तो इसीलिए हम लोग मदद करने वाले हैं। तो अभी का जो लेटेस्ट करंट किंग है इन लोग का ये मर्सिया का वो है बुरग्रेड ऐसे कुछ नाम है यार उसका, पता नहीं। कोई बात नहीं, उसको हम लोग को भगाना है इस जगह से, अकाल देना है, डीथ्रोन करना है फाइनली। तो अगर हम लोग इस जो नया किंग बनने वाला है उसको अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो वो हमारा अलायंस बन सकता है। तो मर्शिया में हमारा पावर रहेगा। तो इसी तरह हम लोग को अपना रीजन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। आप ऐसे करोगे तो ये आपका रीजन बढ़ेगा, तभी आप जाके। अरे स्टोरी मोड है पूरा का पूरा कनेक्टेड है। कहाँ पे जाना है यार? इधर ऊपर जाना है क्या? ओके नीचे जाना है, ठीक है समझ गए। ये बंदर की तरह बहुत चढ़ता है यार यहाँ से वहाँ पे। और सबसे गलत बात मतलब यही है कि किधर भी चढ़ता ना ऐसा, तो मतलब डिफ़िकल्टी होती है उतरने के लिए। चलो कूदी मारो बेटा। एक गिरेगा रे तू, अरे मत ना रे भैया, बच गए। Eivor, is your axe sharpened? I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy.
We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of One does not war. need to fight to be Move! Move! Calm, Ivar. A fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I don't want to kill anyone. These men are my friends. My countrymen. Relax, little king. They won't call you friend now. You can thank your father for that. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father, too. Mount up, Eivor. It's a long ride to Tamworth. You'll have to endure तो my यार brother. गाइस He always हमें finds जाना new है अभी ways to फाइट के humor लिए. himself. ट्रैवल टू I'll keep that in टैमवर्थ. mind. टैमवर्थ एक फोर्ट है, वहाँ पे You smell बुरग्रेड that, छुपा हुआ है. The तो stink of उससे jealousy पहले हम लोग of को our budding friendship. आह्वान देना है. उससे पहले हम लोग को समझाना है, प्यार से धमकाना है कि भैया अपना जो किंग का कुर्सी छोड़ दो और इसको किंग बना दो. अगर वो नहीं मानते तो फिर यार हमको वायलेंस करना पड़ेगा. तो यार बहुत ही लंबा रास्ता है. इन लोग ऐसे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखो ना कितना लंबा है. एक काम करते तब तक रुको, हम लोग डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल करते, मतलब डायरेक्ट आगे जहाँ पे हम लोग को जाना है वहाँ पे जाते. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो ये थोड़ा बहुत काम में करके लेता तब तक. Safe from who? You and... brought this Shire to hell. Beards are with us, common folk. Burgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him. तो गाइस वी आर फाइनली हियर, और देख रहे हैं आप कितना अच्छा फोर्ट है. लाइट सनलाइट वगैरह आ रहा है. वाह वाह वाह, क्या ग्राफिक्स है यार. सही, एकदम सही लग रहा है. बढ़िया, एकदम बढ़िया. तो अब बातें करते सीधा बिना कोई रुकावट के. चलो. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover! अरे काका जाएगा छोड़ना रे. हरामी ये ना खाली, तेरे को मारेंगे नहीं हम लोग. जल्दी आओ नीचे, छोड़ दो आप जगह यहाँ पे. ये हमको दे दो ये किंग. किंग को हमारे हवाले कर दो भैया. बुरग्रेड, तेरी बरगड़ी निकालूंगा साले. ये तो सुनते ही नहीं यार, क्या करूं मैं भी. इसको तो साला इतने आधे देना पड़ेगा. इसको तो साले मार के सुझाना पड़ेगा, तब तक ये सुनेगा नहीं. चड्डी निकालो साले की. मैं तो बोलता चड्डी. भाई बुरग्रेड साला इसी चड्डी निकल के मारा मैंने मेरे को. ये चल हाथ पकड़, मेरी चड्डी निकल के साले. मेरे चड्डी को साले इतना अंदर बैस मारे तो साले चड्डी हाथ नहीं लगा पाएगा, वैसे मर जाएगा. अरे यार ऐसी बहुत सारी चड्डी देखी है मैंने. मेरे को क्या बोलता है. अब हम थोड़ा इसको जवाब देंगे. Would you settle for a Norse? We're not as gentle, but we're much better poets. Norse, Dane, dog. You're all the same to me. All godless. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver.
You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! Back to the camp. Round up the men. We're taking Tamworth tonight! Eivor, tell the captain we're ready to march. Eivor and I will round up the men. You know your way around a battering ram. I've seen them in action. I want you at the helm of ours. Strong and agile. I'll be there. Yeah! तो गाइस यार बुरगेड माना नहीं बुरगेड, तो चलो तैयारी करती है हम लोग वॉर की। एक कैंप है हमारा रैग्नारसन। भाई स्पीक विद द कैप्टन। कैप्टन तैयार हो जाइए, हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खतरनाक फाइट लड़नी आज की, और ये हमारी आखिरी फाइट होगी जिंदगी की। आपके मेरे तो नहीं, मेरे तो अभी जिंदगी शुरू हुई है इस गेम में। Let's go. It's time to capture a kingdom. What are we going to do about him? Jailbird. Something wrong? I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. तो गाइस डिस्ट्रॉय द गेट, हल्ला बोल। भाई कहाँ से जाने का ऊपर? ओहो इनमें तो भाई मतलब बहुत ही बढ़िया। यहाँ ओके, यहाँ से जाना है, ठीक है। ये हल्ला बोल, मारो सालों को, मारो घुस घुस के मारो, चल के चड्डी निकालो। ओ भाई 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 आराम से, बढ़िया बढ़िया, जरा बस बढ़िया सब्र करो, जरा बहुत मार रहे आप। साला ऐसा उड़ी मार के तेरा टकरा फोड़ दूंगा ना हराम खोर। ओ मार समझ में। ओ भैया चलो हटो, रास्ते से हटो। ये चीटी वीटी लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं यार, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। बारी में साले हमको डायरेक्ट डोर ओपन करना है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अबे बाजू उठो बे नल्ले लोग, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज वगैरह लेने दो हमको, डोर ओपन दो। ओ भाई ये क्या है, ये गोला क्यों है, ये सर्कल क्यों है यहाँ पे? कोई बात नहीं, रुको, तो हम गेट ओपन करते हैं। हमारी सेना को अंदर आने दो, सेना चलो अंदर आओ, हमला करो, आक्रमण। अरे साले मुखिया, हमें ऊपर से मारने वाले हैं, गलत काम है। ओ भाई ओ या मैं इधर पीछे, आप उधर किधर देख रहे हो? साला भाला लेके आ रहा है इतना बड़ा बड़ा, लंबे से मारेगा ले, चल मारेगा साले नल्ला। मेरे सामने कुछ नहीं रहे, मैं तो डायरेक्ट चीर फाड़ कर दूंगा तेरा। तो मेरा तलवार इतना बड़ा है ना, थोड़ा साले काट के रख दूंगा, इतना लंबा तलवार है मेरा। अभी कौन है यार, रोशन जाना है, रुको, हमको ही सब करना है मेहनत।
बाकी कोई तो मेहनत लेगा ही, हम ही मेहनत करेंगे सब पूरी की पूरी, ठीक है। हमने जो ठेका लेके रखा हुआ है भैया, ऊपर से असैसिनेशन नहीं होता है माँ की। तो भाई यहाँ पे दो लोग यार, मतलब ओ भाई 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 भागो 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 भाई भागो, मम्मी नहीं 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 नहीं, साले मरा क्यों नहीं? अरे ये मरा क्यों नहीं रे? ओ माँ कसम, क्या घुसा है इसने, भोग दिया मेरे को। अरे तुम साले नल्ले इधर देख रहे, ये पहले डोर में खोलता है। ओ माँ कसम, क्या मार रहा है ये, पाइप पेट में घुसा है। अबे रुकना, अरे भाई 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 भागो भागो भागो, मेरा हेल्थ देखो। साले चल, नल्ले मरा कि नहीं हो? अबे मरता, अबे मरना साले। भाई इस गेम में सबसे बढ़िया तो यही है, अगर जितना है तो डिफेंड करो सामने वाले को, उसको भी इज्जत दो। ज़रा डिफेंड नहीं करते हो उसके अटैक्स को तो वो आपको धर देगा, ठीक है, दबोच लेगा। देखो भले आप डॉज करके डिफेंड करो या फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करके डिफेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिलहाल तो मेरा एक ही आम, क्योंकि मेरे पास तलवार ही ऐसी दो हाथ वाली है। ओ माँ कसम भाई, इसमें तो पूरा पूरा घुस गया इसमें, पूरा गन्ना घुस गया इसमें। देखो हमको ऊपर जाना है, हमारी सेना आ चुकी है, आक्रमण हो चुका है इनके ऊपर। अबे साले सो जा नीचे आराम को। रास्पबेरी, थोड़ी रास्पबेरी दे दो मेरे को, बस बस बस, पेट भर गया मेरा, मेरा हेल्पफुल हो गया थोड़ा सा। और रास्पबेरी भाई मस्त है की, रास्पबेरी की झाड़ी इन लोग ही मदद करेंगे। चल तो यार ओ भाई खत्म, किधर गए सबके सब, साले मर गए भाई। फाइनली ये जो टैमवर्थ फोर्ट है हमने हासिल कर लिया, हमारे कब्जे में कर लिया है टैमवर्थ फोर्ट्रेस। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब वो बर्गरेड को ढूंढेंगे, साला हरामखोर भिखारी। It's over, Bergred. Lay It's down your over, weapons and बर्गरेड, lay down surrender. your weapon and surrender। बर्गरेड कहाँ पे है? तुम्हारी बरगड़ी पुण्य में आया हूँ। बर्गरेड बाहर आ जाओ, फोर्स। बर्गरेड, ए बर्गरेड किधर है भैया? भाई बर्गरेड भागा की क्या? अब बर्गरेड का वो सेनापति भाग गया लगता है भाई। ये डर, ये गलत बात है। फट्टू लोग साले, क्या क्या इन लोग किंग बनेंगे रे? ये पटेली देखो है, इसका बहुत पटेली लग रहा है मेरे को साला। एटीट्यूड है बंदे में, एटीट्यूड। रिक्वेजिशन लेटर भाई, क्या क्या लेटर है अंदर? Bergred called for help, enlisted the aid of powerful men. Who are these warriors he speaks ओके, of? थोड़े गोल्डन डब्बे हुए यहाँ पे, थोड़ा लूट कर लेते। टैटू भाई, तू किधर आ रहे हो कबूतर? Ivar, I found a letter. There's a symbol here. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton.
Our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. You were one of Burgred's thanes. He must have some sense of where he'd be. Burgred had his secret haunts, but he never told me of them. Kept me quite in the dark. For good reason, I suppose. Tana is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tona's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word. श्योर वुल्फ, ये हमारा किंग बनने वाला है, ये हमारा एलाइज है, तो इसको हेल्प करना है हमें बर्गरेट को निकाल के किंग बनाने के लिए, और इसका बच्चा भी है, वो क्या नाम उसका, जियो वुल्फ ऐसे कुछ नाम है, पता नहीं मेरे को नाम भूल गया। तो यार गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। तब तक अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो चैनल को। लेट्स सी, और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और वीडियोस आएंगे धमाकेदार। कोई बात नहीं यार, चलो टेक केयर।